फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2024 की न्यू नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA के द्वारा। कब से कब तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसकी स्लॉट्स कितनी कितनी है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलेगी। तो सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन करके रख लीजिए। जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, उसको भी पता चले इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और जिसने टेलीग्राम चैनल से देख रहे हो उसने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहे। एंड जिसने फेसबुक पेज से देख रहे हो उसने फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहे, जिससे आप लोगों को यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सभी तरह की प्लेटफॉर्म से आने वाली सारी अपडेट मिल सके। तो यहाँ पर देखिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2024 की न्यू नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA के द्वारा, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ML/PS/1503/2024-25 डेट 21 नवंबर 2024। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ स्लॉट्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम ऑफ द ट्रेड एंड डिसिप्लिन फीटर, टोटल स्लॉट्स 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ITI, NCVT, SCVT इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, मंथली स्टाइपेंड 14,000 रुपीज़। सेकेंड नेम ऑफ द ट्रेड एंड डिसिप्लिन ड्रॉट्समैन सिविल, total slots 1, educational qualification ITI, NCVT, SCVT in respective trade, monthly stipend 14,000 rupees. Third, name of the trade and discipline mechanic diesel, total slots 1, educational qualification ITI, NCVT, SCVT in respective trade, monthly stipend 14,000 rupees. Fourth, name of the trade and discipline electrician, total slots 2, category wise break up, UR category 1 slots, OBC NCL category 1 slot, educational qualification ITI, NCVT or SCVT in respective trade, monthly stipend 14,000 rupees. Fifth, name of the trade or discipline computer operator and programming assistant, total slot 5, category wise breakup, UR category 1 slot, SC category 1 slot, ST category 1 slot, OBC NCL category 1 slot, EWS category 1 slot, educational qualification ITI, SCVT in respective trade, computer operator and programming assistant, monthly stipend 14,000 rupees. Fifth, name of the trade and discipline programming and system administration assistant, total slot 5, category wise breakup, UR category 1 slots, SC category 1 slot, ST category 1 slot, OBC NCL category 1 slot, EWS category 1 slot, educational qualification ITI, NCVT in trade, computer operator and programming assistant, monthly stipend 14,000 rupees. Sixth, name of the trade and discipline stenographer, English, total slot 5, category wise breakup, UR category 1 slot, SC category 1 slot, ST category 1 slot, OBC NCL category 1 slot,
EWS category 1 slot. Education qualification ITI, NCVT, SCVT in respective trade. Monthly stipend 14,000 rupees. 7th, name of the trade and discipline welder, gas and electric. Total slot 1. Educational qualification ITI, NCVT or SCVT in respective trade. Monthly stipend 14,000 rupees. 8. Name of the trade and discipline secretarial assistant. Total slot 5. Category wise breakup. UR category 1 slot, SC category 1 slot, ST category 1 slot, OBC NCL category 1 slot, EWS category 1 slot. Educational qualification graduation degree BA, BSc, BCom on regular basis. Monthly stipend 18,000 rupees. इसके बाद नेक्स्ट टेक्निकल अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस. 9th, नेम ऑफ द ट्रेड और डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. टोटल स्लॉट 5. कैटेगरी वाइज ब्रेकअप. यूआर कैटेगरी 1 slot, SC कैटेगरी 1 slot, ST कैटेगरी 1 slot, OBC NCL कैटेगरी 1 slot, EWS कैटेगरी 1 slot. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल. मंथली स्टाइपेंड 16,000 rupees. 10th, name of the trade and discipline electrical engineering. Total slot 5. Category wise breakup. UR category 1 slot, SC category 1 slot, ST category 1 slot, OBC NCL category 1 slot, EWS category 1 slot. Educational qualification regular diploma engineering electrical. Monthly stipend 16,000 rupees. 11th, name of the trade and discipline civil engineering. Total slot 5. Category wise breakup. UR category 1 slot, SC category 1 slot, ST category 1 slot, OBC NCL category 1 slot, EWS category 1 slot. Educational qualification regular diploma engineering civil. Monthly stipend 16,000 rupees. 12th, name of the trade and discipline electronics, computer science, information technology. Total slot 2. Category wise breakup. SC category 1 slot, OBC NCL category 1 slot. Educational qualification regular diploma engineering electronics computer science IT. Monthly stipend 16,000 rupees. इसके बाद नेक्स्ट अप्रेंटिस फॉर डिग्री इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. 13th, नेम ऑफ द ट्रेड एंड डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. टोटल स्लॉट 5. कैटेगरी वाइज ब्रेकअप. यूआर कैटेगरी 1 slot, SC कैटेगरी 1 slot, ST कैटेगरी 1 slot, OBC NCL कैटेगरी 1 slot, EWS कैटेगरी 1 slot. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेगुलर डिग्री इंजीनियरिंग मैकेनिकल. मंथली स्टाइपेंड 18,000 rupees. 14. Number of trade and discipline electrical engineering. Total slot 5. Category wise breakup. UR category 1 slot, SC category 1 slot, ST category 1 slot, OBC NCL category 1 slot, EWS category 1 slot. Educational qualification regular degree engineering electrical. Monthly stipend 18,000 rupees. 15. Name of the trade and discipline civil engineering. Total slot 5. Category wise breakup. UR category 1 slot, SC category 1 slot, ST category 1 slot, OBC NCL category 1 slot, EWS category 1 slot. Educational qualification regular degree engineering civil. Monthly stipend 18,000 rupees. 16. Name of the trade and discipline electronics computer science information technology. Total slots 2. Category wise breakup. SC category 1 slot, OBC NCL category 1 slot. Educational qualification regular degree engineering electronics computer science IT. Monthly stipend 18,000 rupees. इसके बाद नेक्स्ट ग्रेजुएट जनरल स्ट्रीम. 17. नेम ऑफ द ट्रेड एंड डिसिप्लिन ग्रेजुएट ऑफ जनरल स्ट्रीम. टोटल स्लॉट 15. कैटेगरी वाइज ब्रेकअप. यूआर कैटेगरी 7 slot, SC कैटेगरी 2 slot, ST कैटेगरी 1 slot, OBC NCL कैटेगरी 4 slot, EWS कैटेगरी 1 slot. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री BCom, BCA, BBA, BA and BSc. Monthly stipend 18,000 rupees.
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स जो कि काउंट की जाएगी 10 दिसंबर 2024। रिलैक्सेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। SC ST PWD कैटेगरी 5 ईयर्स, OBC कैटेगरी 3 ईयर्स। इन सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन करवाया जाएगा मेरिट के बेसिस पर, जो कि क्वालिफाइंग डिग्री के फाइनल मार्क्स और ऑल सेमेस्टर मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मैक्सिमम मार्क्स काउंट की जाएगी आउट ऑफ 100 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, इसका मतलब केवल इंडिया के निवासी ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और www.deendayalport.gov.in इस वेबसाइट पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और https://www.deendayalport.gov.in.en/current-openings इस वेबसाइट पर जाकर ही आप लोगों को ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 21 नवंबर 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप लोगों को हमारे अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन करके रख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम एंड फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर भी जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन PDF एंड एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर भी जाकर डिटेल नोटिफिकेशन PDF चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।